Welcome Inspector Vikram Patel. Good evening and relax everyone, क्योंकि we've got everything under control right now. हमारे सूत्रों के अनुसार एक जूल थीफ है जो रेड सन को चुराने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि आप सब बहुत सेफ हैं और रेड सन भी। Okay, we've got him. All units, let's go. My game, my rules, my victory. क्योंकि राजन औलख ने कभी हारना सीखा ही नहीं। आप सब इस जूल को एक आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि अब ये जूल गायब होने वाला है। Shall we? Hack detective. Hack detective. It's done. आप सब लोग काम करोगे? जब विक्रम आए तो उसे बता दे, एक मैसेज दे दो, गेम ओवर। ले लो रेड सन। ये क्या हुआ? सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली था। Is there something wrong? Warning. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां! Come on, everybody! Woo! Let's have a bigger round of applause. सब चोर तो इकट्ठे हो गए, अब उनको भी बुला लेते हैं जिन्होंने इस पूरी चोरी की मास्टरमाइंड करी थी। बुला ले उनको। Yes, please बुलाइए। Okay, ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite on stage Director Original Films at Netflix India, Ruchika Kapoor Sheikh, and joining her on stage is the mastermind behind Jewel Thief and some of India's biggest blockbusters, making his grand OTT debut, the one and only Mr. Siddharth Amar. Woo!
चलिए, चोर भी इकट्ठे हो गए, मास्टरमाइंड भी इकट्ठे हो गए, कुछ लोग रह गए हैं। एक सेकंड कुणाल सर, मैंने वो हीरा और इन चोरों को स्टेज पे थोड़ा सा बिजी कर रखा है, आप भी आ जाइए प्लीज जल्दी से। कुणाल सर आ जाइए प्लीज। Here we go, ladies and gentlemen, a big round of applause. तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ऑफ कोर्स ओके सर, मैं कह रहा था सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, बट मैं कह रहा था कि जनता काफी उत्सुक है, एक्साइटेड है, सो शुड वी गो है? आपकी इजाजत होनी चाहिए। You're the director, call for it please. I'm actually the producer, but I call the shots here. So let's see the trailer, guys. ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। आपकी पिक्चर है, खर्चा काफी किया गया है, स्टाइल और अंदाज में होगा। देखिए वॉल्ट ऐसे खुलेगा नहीं सर, एक कोड के जरिए खुलेगा, और वो कोड जो है वो सिर्फ आपके ही हुक्म से आ सकता है। तो बुलाओ उसको। सर कैसा लगा आपको आपकी खुद की पिक्चर का ट्रेलर? और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं, असली मैजिक जो है वो पर्दे के पीछे होता है। और अब इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा टू गिव अस अ ग्लिम्स इनटू द पैशन, प्लानिंग एंड पावरहाउस क्रिएटिविटी दैट brought it all together. Please welcome the director, original films at Netflix India, Ruchika Kapoor Sheikh, to share. ट्रेलर के बाद एक छोटी सी स्पीच तो बनती है? ट्रेलर ज्यादा धमाकेदार होगा, स्पीच धमाकेदार शायद नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, बिकॉज आई एम हियर टू टॉक अबाउट ऑल द इनक्रेडिबल पीपल बिहाइंड दिस फिल्म। फर्स्टली अ लिटिल बिट अबाउट अस एट नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पर हमारा बस एक ही मकसद है, टू टेल स्टोरीज दैट आर इमोशनल, इंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग। कुछ कहानियां आपको हंसाएगी, कुछ आपको रुलाएगी, एंड सम विल हैव थ्रिल। थ्रिल से याद आया, I'm here to talk about the most thrilling heist action adventure film of the year, Jewel Thief. And the man who made it possible, Siddharth Anand, as the producer, putting together this film at such scale with a relentlessness in its narrative and lots of twists and turns. Starring a formidable cast like Jaideep Ahlawat. Boy, he really knows how to play bad. फ्रॉम जाने जा टू महाराज, हमने डिसाइड किया है हम आपको जयदीप अहलावत के सारे रंग और रूप सिर्फ नेटफ्लिक्स पे दिखाएंगे। मूविंग टू कुणाल कपूर, who brings his A game as the cop, who's incessantly quick on the heels of this Jewel Thief. He brings his signature presence and charm to his role with so much effortless ease. Nikita Datta, who adds so much gravitas, innocence and a silent depth to the film. And finally, the Nawab turned thief, Saif Ali Khan. What is this film without him? Basically, it's all your cheers. Finally, Mamta Anand, who is the 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. backbone and anchor of this film. See, there's so much validation backstage. She's not here with us today because, much like other days, she's working backstage. But thank you so much for giving the trailer so much love. And we're hoping when this drops on the 25th of April, you give Jewel Thief a special place in your houses and in your hearts. Thank you so much. We're excited to witness this grand streaming debut powered by Siddharth Anand's vision and Mamta Anand's powerhouse production house, Marflix. With that, let me invite Mr. Siddharth Anand back on stage. Let's give a big round of applause.
everybody is excited. I just wanted to ask you, romance, war, espionage, and now this genre. What excites you about a story? What is the common thread between all the genres which excites you about making a film? Common thread, I think, is entertainment. I think there are so many people here. It's my endeavor is to make films that you can watch as a community together, enjoy it. CD बजाओ, ताली बजाओ, हंसो, थोड़ा सा रो भी लो. ये पिक्चर अच्छी है. सर मैं कहता थोड़ा सा आगे आ जाते हैं while we just set up, and of course the audience has given you so much love for all the films you've created. We're really looking forward to this super streaming debut. And even though I wanted to ask you later, मैं कह रहा था कि पूरी कास्ट को बुला लेते हैं, पूरे क्रू को बुला लेते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है. किसी को नहीं मिलेगा. Many rules up there. No wonder everybody's been searching. Technically wrong. I mean, he breaks the law, but he does it for a good reason, usually to help someone in his family, and that kind of, it's an honorable kind of theft. So it makes it a very exciting kind of character. He's got skills that are of the criminal type. And I think people enjoy watching people breaking the law in a movie like this. It gives them a chance to kind of take on the system. And I think that's what heist films are about. And it's got a tremendous kind of strong anti-hero antagonist in Jedi. So it was a lovely part for me. Fantastic. I saw the trailer, Jedi. आप इतने कमाल के unforgettable किरदार करते हैं. जब भी कुछ करते हैं उसमें अपना कुछ नयापन लेके आते हैं. When we saw this, थोड़ा confusion सा हो रहा है कि आप चोरी करवा रहे हो, कर रहे हो, कि क्या है. So थोड़ा सा आप भी बताएं अपने किरदार के बारे में प्लीज. तो देख लो, रेड से नहीं लगा. इतना कैरेक्टर में वाज तक. बट आप क्यों जानना चाहते हैं? आपको फिल्म नहीं देखनी है? सर मेरे पास सब्सक्रिप्शन जो है ना वो पासवर्ड चेंज कर दिया मेरे दोस्त ने. नहीं देखिए, ये जैसे सर ने कहा कि आज फिल्म्स में हमेशा बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स और किसी को नहीं पता है कौन क्या गेम खेल रहा है. एज सर सेड कि नोबडी नोस, हमेशा ब्लफ होगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा. किरदार बदलेंगे, उनकी हरकतें बदलेंगी तो कुछ नया ट्विस्ट आएगा. तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. अब ये नहीं बताऊंगा कि मैं चोरी करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो आपको फिल्म देखने वाली है. चलिए सिद्धार्थ सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कितने की चोरी लगती है सर
कि इतनी शानदार कास्ट इकट्ठी करनी पड़े, मतलब पिक्चर में नहीं, मतलब इन रियल लाइफ कितने की चोरी करनी पड़ती है कि इतने शानदार स्टार्स रखे हैं? मुझे नेटफ्लिक्स में जाके बहुत बड़ी चोरी करनी पड़ी थी इसके लिए और मैं बता नहीं सकता हूँ क्या है बट बहुत मेहनत लगी, बहुत स्किल लगा इसके लिए. So I wanted to know, because it's your OTT debut, and of course this is great partnership between you and Netflix. Could you share more about it, sir? I think it's a great fit for Netflix's film. The fact that it will debut in 190 countries with 300 million subscribers watching this film on day one. You know, my endeavor was to make an immersive film experience that you can watch in the comfort of your couch at home. So that's what Jewel Thief will offer you, and Netflix is the best platform for that. You know, let's have a big round of applause for that. Talking about the platform, of course, Netflix has some of the most gripping, iconic high stories globally. So I wanted to ask from you, what makes Jewel Thief a perfect fit for Netflix India? You know, we actually always do a genre that's best in class, and the best in class really comes from the team behind it. I don't think I mentioned this earlier, but both Robbie and Cookie have so masterfully crafted this absolute masaledar, fun, heist action film. It's in fact harder to do a familiar genre and yet throw in surprises and mount it in a certain way, give every actor that time in the sun, round of characters. So I think just the experience of working with such incredible creators who've brought honesty, depth, and a whole lot of conviction to the film has really been the reason that, you know, we went ahead and did Jewel Thief. Of course, it helps that some really decent actors like Saif Ali Khan, Jaideep Palawat, Geeta Datta, and Kunal Kapoor are a part of it. I think it's the whole package. You know, talking about the package, I saw this package being delivered on a bike. You know, the moment you made that entry and you said, "यार घबराने की कोई बात नहीं, सब secured है." मैंने कहा यार ये अगर ट्रेलर ऐसा दिख रहा है तो पिक्चर में क्या धमाकेदार होगा. Could you share, you know, something about your character and what excited you about this character for you to pick up this project? Well, you know, I was looking to do a film like this. Like, I've never done a heist film, which is a roller coaster ride, thriller, surprise after surprise. So I was looking to do something like that, and luckily I had a chance to do it with an amazing team. But for me, what was really exciting was the part. You know, I get a chance to play a tough, ruthless cop. Usually I'm always cast as the mediator, the peacemaker, the poet, the philosopher. And I mean, in usual circumstances, if I was cast in this film, I would probably be putting all of you all on the table and saying, let's just sort this out. Let's just divide the red sun and move on. You know, that's the kind of parts I get. But here, you know, I get a chance to not be the peacemaker. I get a chance to have a gun, a badge, and slam a few people around. And that was great fun for me.